Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me your English teacher students. So students, in this video we would like to start the chapter 3 of English subject, that is the little girl. So with the heading you can may see that the title is all about the girl, small girl. Little means small girl. So in this chapter we will talk about the little girl, and let's begin. We won't waste our time. So before we will start this one, see, you can see over here there are the meanings also in this chapter. So this chapter will be divided into two half. So students, if you have a textbook of English subject, so you should have to write meanings in your notebook of chapter 3 students, okay, and you have to learn it also. So let's begin our subject English chapter 3, the little girl. The first paragraph. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." So students, in this first paragraph, we were talking about a little girl. And little girl is having a figure like feared and avoided. Feared means डरा हुआ, एकदम डर के रहने वाले. Feared means डरना, and avoided मतलब neglect करना, avoid करना. So every morning her father came to her room and gave her a casual kiss. And while responding, the girl responded to her father, "Goodbye, father." And then there was a glad sense of relief. मतलब उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ होता था जब वो नॉइज़ सुनती थी उसके फादर के कैरेज की. याद है ना आपको लास्ट टाइम कैसे होते थे पहले ज़माने में कैरेज? देयर वॉज अ हॉर्स एंड आफ्टर दैट देयर वॉज अ होल कैरेज. सो दे हैव टू डू दैट वन, राइट स्टूडेंट्स? So when she heard the carriage noise going fainter and fainter, मतलब बहुत स्लो आवाज़ आने लगा, मतलब that means कि उसके फादर चले गए हैं. तो she feels relief, मतलब उसे बहुत शांति लगती थी. She was feeling relief. एंड इन द इवनिंग, जब शाम होती थी और उसके फादर जब आते थे, तब वो स्टेयर मतलब सीढ़ियों के वहाँ पे खड़ी रहती थी और वो लाउड वॉइसेस उनकी सुनती थी. जैसे कि वो बोलते थे कि मेरे लिए टी लेकर आओ ड्राइंग रूम में, अभी तक क्या पेपर आया नहीं है? फिर मदर जाके वो पेपर देखती थी, देख के आओ पेपर कहाँ है, एंड मुझे स्लीपर्स दो. ऐसे ऐसे वो बोलते थे. किसके? उसके फादर. Second paragraph. Kezia's mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boot." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" "I don't know, father." "You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor." So what happened, students? Kezia, we can see that the little girl name is Kezia. सो उसकी मदर केजिया को बुलाती है और उसे बोलती है कि तुम अच्छी लड़की हो तो जल्दी इधर आओ और अपने फादर के बूट्स उतारो, मतलब उसने जो बूट्स पहने थे उसको उतारो. एंड उससे स्लोली वो गर्ल आती है स्टेयर्स में से, एंड मोर स्लोली वो हॉल की तरफ जाती है.
एंड फिर वो ड्राइंग रूम का डोर खोलती है. एट दैट टाइम ही हैड हिज, मतलब उसके फादर स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे. स्पेक्टिकल्स, व्हाट इज स्पेक्टिकल्स? स्पेक्स. ओके, स्पेक्स, इट्स नोन एज स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मे. एंड उन्होंने अपनी डॉटर को इस तरह से देखा कि मतलब क्या है, इस तरह से उसने देखा कि वो लिटिल गर्ल डर गई. तो फिर उसने बोला केजिया को कि केजिया हरी अप फास्ट, पुल ऑफ दिस शू बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, मतलब ये बूट निकालो और इसको बाहर लेकर जाओ. क्या तुम ये दिन, आज के दिन अच्छी लड़की थी? यू आर अ गुड गर्ल और नॉट? तो शी टोल्ड आई डोंट नो फादर. उसने बोला मुझे नहीं पता. तो उसके फादर बोलते यू डोंट नो? इफ़ यू स्टडर, मतलब तुम अच्छी बच्ची नहीं होगी तो मदर को डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा. ही वॉज टेलिंग लाइक दैट वन, मीन्स एक्चुअली by this line we can say that her father was threatening him, right? उसे डरा रहे थे. So the third paragraph, she never studied with other people, had quite given it up, but only for with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wrenched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. So what happened in third paragraph? When she never stirred, मतलब वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने स्टर्विड टाइप की नहीं थी. बट एक्चुअली जब उसके फादर होते थे तब, नाउ एट दैट टाइम शी वॉज वेरी इन अ हरी मूड एंड शी फील्स वेरी अफ्रेड, फियर्ड. मीन्स एक्चुअली इससे ये पता चलता है कि केजिया अपने फादर से बहुत डरती थी. एंड दैट्स वाई शी ट्राई टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, मतलब अपने फादर के सामने वो गलती ना करे इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स डालने लगती थी. देन आफ्टरवर्ड, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है तुम्हें? वाई आर यू लुकिंग सो व्रेंच्ड अबाउट? हिज मदर सेड, मदर ने बोला कि तुम इसे इस तरह से देखोगे, यू विल टॉट लाइक दिस वन, सो नॉट डिपेयर, यू विल बी गिविंग अप टू ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब तुम तो इसे सुसाइड करने में तुल्य कर सकते हो, तुम इस तरह से इसे ट्रीट कर रहे हो. फिर उसने बोला, उसकी मदर ने, कि केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मतलब ये जो टी कप है उसको टेबल के वहाँ पे लेकर जाओ अच्छे से, केयरफुली. He was so big, means Kezia told that he was so big, his hands in his neck, especially his mouth, when he yawned. Yawn means yawn लेना. तब वो एक बहुत बड़े giant जैसा लगता है. He looks like a giant when he was sleeping on the couch, students. 4 number. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother took her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So students, what happened that on संडे के दिन में क्या होता है कि सब घर में छुट्टी होती है सबकी. तो उसकी ग्रैंड मदर थी, उसने उसे फोर्सफुली या आप उसको बोला कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ और एक अच्छी सी टॉक, मतलब एक अच्छे से बात करके आओ अपने मदर और फादर से. तो प्रेशरली द लिटिल गर्ल वेंट टू द ड्राइंग रूम एंड इन फ्रंट ऑफ देम हर मदर वॉज रीडिंग. ओके, उसकी मदर रीडिंग कर रही थी और उसके फादर सोफ़ा में स्ट्रेच करके सो रहे थे और उनके फेस में हैंकरचीफ था.
His feet one of the best cushion, मतलब उसके जो पैर थे, उसके फादर के जो पैर थे वो एक सबसे बेस्ट कुशंस मतलब पिलो के वहाँ पे रखा हुआ था और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग कर रहे थे, मतलब खराटे रहे थे. See, you can see in the picture, her mother is reading over here and her father is just sleeping, and there is the leg in the best cushion and face in the handkerchief, right? So this was happening in front of them. See, there was written over here, the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. Okay. देन शी सेट ऑन अ स्टूल, एक स्टूल में वो वहाँ पे जाके बैठ गई एंड उसने देखा, तब तक वेट करती गई जब तक वो लोग उठ ना जाए उसके फादर. एंड देन ही आस्क्ड व्हाट्स, देन आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, मतलब उसने टाइम पूछा तो उसने बोला कि डोंट स्टेयर सो केजिया, तुम मुझे इस तरह से मत घूरो, यू आर लुकिंग लाइक ए ब्राउन आउल की तरह यू आर लुकिंग लाइक दैट वे. सो वन डे when she was kept indoors with a cold, मतलब जब बहुत ठंडी थी उस टाइम में एक दिन उसकी ग्रैंड मदर ने, मतलब केजिया की ग्रैंड मदर ने बोला कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो यू शुड हैव टू मेक अ पिन कुशन एज अ गिफ्ट, मतलब तुम उस अपने फादर को गिफ्ट दो, जो एक अच्छा सा पिन कुशन बनाओ, वो तुम उसे गिफ्ट दो, एंड दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सिल्क, येलो सिल्क, मतलब येलो सिल्क पीस से एक बहुत ब्यूटीफुल पिन कुशन आप बनाओ एंड गिफ्ट टू योर फादर. देन इन द 5th पैरा, laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of the fine paper, gathered them up, tore them into a tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally mother came to Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in your room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dinner room this instant. सो वॉट हैपन कि उसकी ग्रैंड मदर ने बोला ना कि तुम कुशन बनाओ, सो ही जस्ट फाउंड अ वेरी गुड पीस एंड शी जस्ट स्टिच्ड इट आउट 3 times एंड अनसाइड, मतलब वो पिलो के अंदर में कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा ना, तो वो अपनी ग्रैंड मदर को देखने गई, बट उसकी ग्रैंड मदर गार्डन के वहाँ पे थी. तो देन शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स रूम, वो मदर्स के रूम में गई और उसने देखा कि टेबल में ऊपर बहुत सारे शीट्स है पेपर के, फाइन पेपर के शीट्स बने हुए थे. तो उसने वो लिया और उसके टाइनी टाइनी पीसेस किए और उसको कुशन के अंदर रख दिया और उसे स्टिच कर दिया 4th साइड से. उस टाइम, उस नाइट को, व्हेन दिस वाज हैपन, दैट नाइट वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, मतलब बहुत चिल्ला चिल्ली और बहुत ज़्यादा क्राइनेस हुई थी. क्यों? क्योंकि उसके फादर ने एक ग्रेट स्पीच बनाया था पोर्ट ऑथोरिटी के लिए, जो लॉस्ट हो गया था, जो गुम हो चुका था. सारे रूम सर्च कर लिए, all the servants were questioned at that time, and finally mother came to Kezia's room. Then she asked to the Kezia that have you seen some papers on a table in your room? So Kezia said, oh yes, she said, I tore them up for my surprise, मतलब उसने सारे टोर करके अपने सरप्राइज में रखा. Then mother screamed, what? कम स्ट्रेट डाउन टू द डिनर रूम दिस इंस्टेंट, मतलब सीधा सीधी नीचे आओ डिनर रूम में. देन द 6th one, and she was dragged down to where father was facing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. That's the child
to bed this instant. So students, what happened? She said she just came in front of her father, right? And father was just facing to and fro, मतलब इधर देख रहे तो उधर, like he was in a hurry mood, in a shocking way. So her mother explained all this thing, and then he asked to the Kezia that have you seen it, you have do it. So he said no. He whispered, मतलब वो घबरा गई, एक्चुअली घबरा गई. देन मदर ने बोला गो टू हर रूम एंड फेच ऑल द डैम थिंग, वो जो भी था वो सब निकालो एंड पुट इट इन अ बेड इंस्टेंट, तुरंत की तुरंत फिर घर में सो जाओ, तुरंत बेड में जाके सो जाओ स्टूडेंट्स. ऐसा किसने बोला? केजिया की मदर ने उसको बोला स्टूडेंट्स. सो देन 7th paragraph. Crying too much to explain, she lay on the shadowed room, watched the evening light, made a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink plums. So what happened students कि वो बहुत रो रही थी. She was crying too hard. Then afterwards a led shadow come in the room and watching the evening light and make a sad little pattern on the floor. तो क्या हुआ, उसके फादर आए उसके रूम में और उनके हाथ में एक रूलर था. तो हर फादर टोल्ड कि आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. तो वो बोलती कि नो शी स्क्रीम, वो स्क्रीम करती है, वो अपने बेड क्लोथ्स में छुपने का ट्राई करती है. तो उसे वो चीज़ खींच लेते हैं उसके फादर. फिर वो बोलते कि सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड उसने होल्ड आउट योर हैंड्स, हाथ निकालो. आज तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कभी भी किसी और की चीज़ें जो उसको आपको बिलोंग नहीं करती है वो चीज़ नहीं छूना चाहिए. देन शी सेड इट वॉज फॉर योर बर्थडे. Then came down the ruler on her little pink plums. फिर उसने उसके हाथ में मारा. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child slunk to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flow into her cheeks. So what happened students? Hours later, मतलब कुछ घंटों के बाद, हर ग्रैंड मदर रैप्ड हर इन अ शॉल में उसने उसे रैप किया एंड उसने रुकिंग चेयर के वहाँ पे रख दिया, बैठाया उसे. एंड द चाइल्ड स्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. उसने चाइल्ड को अच्छे से पकड़ा एंड ही जस्ट हेल्प इट आउट. एंड उसने बोला कि फादर्स किस लिए बनाए जाते हैं. And then she was just cleaning his hanky. Take it hanky and blow your nose. नाक साफ करो एंड गो टू द स्लीप, पैट. यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग तक में ये तुम सब भूल जाओगी. एंड आई लिसन टू एक्सप्लेन फादर, मैं तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करूँगी, तुम ज़्यादा अपसेट मत हो. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. कोई भी चाइल्ड ये जल्दी से नहीं भूलते. नेक्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ हिम, उसने अपने हाथ पीछे कर दिए और हाथ अब उनके आँख में से आंसू आने लगे. एंड इट वॉज फ्लूइंग लाइक अ फ्लूज चिक. The McDonalds lived next door. They have 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, Mao, on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round flowers' beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time.
decided there were different sorts of fathers. Suddenly, one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. See, you can see in the picture, she was just talking about this one. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. So what happened, students? कि there was a McDonald's also. मतलब उसके neighbors में McDonald's थे. उसने वहाँ पे क्या देखा कि उसके 5 बच्चे हैं. एक जगह पे आप यू कैन सी इन द पिक्चर, एक देखो सिर के ऊपर है, एक उसको वहाँ पे पकड़े हुए हैं, एक नीचे से पकड़े. मीन्स देयर फादर वॉज प्लेइंग विद देम. उसके फादर उस अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे. एंड दे वॉज हैविंग अ वेरी गुड time, and there was a flower beds also shaking with laughters also. Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing. मतलब वो लोग सब एक दूसरे के साथ हंस रहे थे खुशी खुशी. Then she thought that कि there was a different sorts of father. मतलब सबके fathers अलग अलग होते हैं. Suddenly on a one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. देन द लिटिल गर्ल जो केजिया थी वो घर में एकदम अलोन थी अपने कुक के साथ जो थी एलिस. तो रात में जब उसके कुक उसे सोलाई, देन अचानक से वो एकदम बेड में से उठ गई एंड शी वॉज वेरी मच अफ्रेड. सी यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट स्टूडेंट्स? दे वर इंजॉइंग विथ ही वॉज इंजॉइंग विथ हिज चिल्ड्रेन. 10th one. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. Then what happened कि शी जस्ट वोक इट अप, राइट? वो डर के मारे वो उठ गई. तो उसने अपने कुक को बुलाया कि मुझे ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं, तब मुझे ग्रैना अपने बेड में ले जाती है और मुझे अपने पास सुला देती है, फिर मैं आराम से सो जाती हूँ. तो उसकी जो कुक थी एलिस, उसने बोला कि नहीं, अभी तो वो कोई है नहीं, यू जस्ट गो टू स्लीप. एंड वो अपने सॉक्स उठा के उसने बोला कि तुम चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे जो पा है ग्रैंड पा वो उठ जाएंगे, एंड दैट वुड बी वेरी मच ट्रबल. देन बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर, फिर से जो नाइटमेयर था, जो सपना था, वो फिर से उसे हुआ. एंड द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप fall apart. So the butcher with a knife and a rope, means there was a thief, you can see, and having with a knife and a rope, and he was coming closer and closer to the Kezia, and he was smiling. The smile was very much dreadful. एक डरावनी smile होते like that way. And she could not move, means Kezia could not move. She was stable and she was still, and she was crying and just shouting out like grandma, grandma. And she woke shivering. She was shivering, वो बहुत कपकपा रही थी. And after that what she saw that her father was beside her bed, and in his hand there was a candle. And her father asked that what's the matter. Then the 11th number is, oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage.
to the big bed room. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Her, rub your feet against my legs and get them warm, said father. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but he was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked the father. Another dream? She said, Oh, said the little girl, my hands on my heart. I could hear it going. What a big heart you have got, father dear. So, what happened? At that time, when she was just whispering out and she was watching a dream, at that time her father came, and having a side by there was a newspaper on the bed, and he put away the paper and carefully tucked the child, and then afterwards he was with his daughter, एंड देन वो दोनों साथ में अच्छे से सो गए थे स्टूडेंट्स. एंड देन आफ्टरवर्ड शी वेक अप. Then her father asked, there was another dream over there, do you have? So he said, no, I don't have any dream, father. So the Kezia thought that how my father will do any work, because he have to go to the work. He was having a so hard time with her grandmother, and every day he had to go to the work. So how my father would be a Mr. McDonald, because doing the work he would be so tired. मतलब वो कितने थक जाते होंगे, right? She had torn up all his beautiful writing. उसने जो भी writings थे वो सारे torn up कर दिए. And suddenly, what's the matter? His father asked. Another dream? She said, no father, my head was on your heart and I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. मतलब केजिया के जो सिर था वो हार्ट बीट में था, मतलब उसके पापा के हार्ट के वहाँ पे था, तो उसे अपने फादर की हार्ट सुनाई दे रही थी साउंड. तो उसने बोला अपने फादर को कि आपके पास कितना बड़ा दिल है पापा. Like that way, students. So this whole chapter was written by the Catherine Mansfield. Okay, Catherine Mansfield. So now this chapter, the little girl, just have been finished out. And see, students, there is a question answer over here. You have to solve this one by your own self. Okay, students. And if I will ever take your test, so that is not necessary that will come in between all these question answers. I will give it by my own self also. Okay, students. So your homework is that you have to complete whole these exercises given in your textbook, and you have to write it in your notebook, students. Okay. So students, now it's my turn to wrap it out my video, and I hope you have liked my video. So just share, subscribe my channel, students, and like it. Till there, stay home, stay safe. With the help of these lines, I would like to pack up. Bye.